Okay, so this is you have interest on investment, interest on balance with RBI, interest on loan, interest on fixed deposit, rebate on bill discounted 1/4/23. I guess you should understand 31st March 24 के लिए बना रहे हो. So 1/4/23 is the opening balance, commission, establishment charges, discount on bill discounted, interest on cash credit, interest on current account, rent and rates, interest on overdraft, director fees, auditors fees, interest on savings bank account, एंड सो फोर्थ करके तुम्हारे पास बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, इनकम दिया हुआ है. यू हैव टू गिव द बाइफर्केशन. If I go and take the bifurcation, so what we need to do is the first part that we do is just prepare that format of P&L. So this is the format of your P&L. This is your income statement for the year ended 31st March, जिसको हम बोलते हैं फॉर्म PL. Control C, and what I'll do is Control V. So this comes on a one page itself. This is your format of P&L. So 31st March 2024. And if you see the format, it's very simple. हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंजेस है. ये प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है ना, ये और प्रोविजन ये नहीं होते ऐसे. दिस आर नॉट गिवन डायरेक्टली दिस वे. So directly comes with profit after tax, total expenses, and this way it comes. So now what we need to do is we need to understand, see what are the things. Income, may interest earned and other income. Interest earned 13 schedule and other income is 14 schedule. What all things will be part of interest earned? Those related to banks. Anything that is related to your banks will be part of your interest earned. For example, interest earned का मतलब है कि बैंक में जिसको लोन दिया उससे पैसा आएगा. तो थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट अब इंटरेस्ट ऑन नहीं है, वो बैंक के लिए खर्चा है. तो बी वेरी क्लियर that what is the income and what is the expenses. So what I have done, just because I'm taking it an online session, I've divided this way. The interest on investment now. So interest on investment, is it a main income for the bank? Yes or no? Or is it the other income for the bank? क्या होगा ऋषिता? Is it a main income or is it an other income? Main incomes. No, it is other income. So it will be part of 14. Then you have interest on balance with RBI. Now, any money that you keep with RBI, if RBI is giving you interest, that is your main income. So 13. Then interest on loans. बैंक का तो काम ही है ना लोन देना, और उस पर अगर इंटरेस्ट कमा रहा है बैंक तो बैंक के लिए फायदा है. तो दैट इज वाई 13. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट. तुमने जाके ऋषिता ने जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया, तुम्हारे लिए इनकम है, लेकिन बैंक के लिए फॉर यू इट इज एन इनकम, फॉर Expensive. बैंक इट इज एन expense. Expense. So this is called as 15 interest expended. Then rebate on bill discounted, ये है opening. Opening. The rebate on bill discounted. Commission, और ये commission क्या है? और received है कि paid है? How do you understand it? कुछ दिया ही नहीं है ना कि सर commission received और commission paid. So here you have to understand that it is commission received. 14. Why? Because जनरली बैंक किसी को कमीशन देगा नहीं. बैंक कमीशन लेगा ऑन सर्टेन चार्जेस ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शंस एंड एवरीथिंग. देन एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है बैंक का, तो 16. डिस्काउंट ऑन बिल डिस्काउंटेड, अगेन इट्स अ मेन इनकम फॉर द बैंक, सो 13. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इज अ काइंड ऑफ लोन ओनली. बैंक ने किसी को लोन दिया, उस पर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट मिला बैंक को, सो दैट इज 13. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 14, क्योंकि बैंक ने पे किया है. Rent rates, operating expense 16, interest on overdraft again 13, directors fees 16, auditors fees 16, interest on savings account 14, 15, 16 postage, country charges 16, P&L is opening, dividend on shares
Dividend on share. This is 14 shares पे पैसा मिला. And income from joint ventures 14 income है. Interest on borrowings. बैंक ने जो बोरोइंग्स लिया था उस पे इंटरेस्ट दे रहा है तो ये 15 है बैंक के लिए. अब तुम लोग को लगा रहेगा कि इतना फटाफट सर ने कर लिया, कुछ समझा ही नहीं. आई गिव यू अ सिंपल वे दैट व्हेन यू ओपन अप योर सम का शीट जो कल मैंने दिया है उस पर फॉर्मेट के हिसाब से जाओ. यू विल अंडरस्टैंड एनी इंटरेस्ट यू हैव गॉट इज an income for you, any interest which you have not got is an expense for you. और आपने किसी को दिया पैसा वो expense है आपके लिए. बस सिंपल सा है और ज्यादा मत सोचो उसमें. What I can do right now, since you all are doing, you might not be doing the sum. So what I can do is I can try to fix it up by having a print screen which is in front of you. Just give me 1 minute so that I can do the print screen for you. Look at that sum. It's already come. आपके ग्रुप पे मैंने डाल दिया है. If you see, मिला. Dishita, did you get the sum? Yes, sir. Okay. It's come on your screen. Now you all can see the sum and you can understand what I have tried to do. Okay. So this is interest on investment, interest on balance with RBI, interest on loans, in rebate on bill discounted, dividend on shares. Just make it as we see. Okay. Surely. Now I have got the format ready for me. Income may I have got interest earned other income. So we need to prepare certain thing called as a schedule, which is called as working note. Working notes and working notes may we shall start with. Now, आपके पास समय because I cannot keep on going up and down. You tell me what are the things you all have written in 13, 13, 13. Please, somebody, if he says, then it will be very fast for me to write it down. Otherwise, I'll have to keep on scrolling up and down. So it is better that आप लोग बता दो. मैंने 13 मार्क करके रख दिया है. कौन सी चीजें 13 में आएगी. अब आप लोग बता दो कौन सी चीजें 13 में है. सर तो फर्स्ट वर्किंग होगा नोट्स इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई. शेड्यूल 13. तो मैं so interest on balance with RBI. Can you tell me the amount? 2 lakhs. I will say it as 200. Interest on loans. हाँ. Why 200? मैं बता देता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर में भी what we do is we ये जो पीछे के जो 3 जीरो होते हैं ना उसे हम लोग निकाल देते हैं. So all the amounts are written in thousand. So whatever is the amount behind, we remove it.
Right now, if you want to maintain it as 2 lakhs, it's fine. We can maintain it as 2 lakhs. But otherwise, generally, we remove these amounts. चलो नेक्स्ट क्या है सेकंड 13 में क्या आया जस्ट कीप ऑन सीइंग व्हाट आर शेड्यूल नंबर 13 में मैंने क्या क्या लिया है Interest जस्ट on कीप ऑन loans. इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट 25 lakhs 90,000. 25,90,000 नेक्स्ट Discount on bills discounted. वो कौन सा डेट दिया है कुछ एक और होगा ना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड Discounts on bill discounted ही है. पहले रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दिया होगा आप लोग को वो ओपनिंग में आएगा ना. हाँ तो वो पहले उसका फॉर्मूला लिखना होगा ना पूरा सो हियर इट विल बी लाइक दिस ओपनिंग rebate on bills discounted. What is the amount of the same? Opening rebate on bill discounted का amount 4,90,000. 4,90,000. उसके बाद wait, discount on bills उसका amount कितना है सी शेड्यूल नंबर 13 डिस्काउंट ऑन बिल्स करके दिया 14 हुआ है lakhs 60,000. 14 लाख 60,000. 14,60,000 उसके बाद Interest on cash credit. नो 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 wait. उसके बाद माइनस करना है क्लोजिंग रिबेट on bills discounted Please see the adjustment वाला पार्ट एक 31st मार्च 24 को एडजस्टमेंट में दिया है नीचे आई थिंक पॉइंट 5 नंबर lakhs. 1 या पॉइंट नंबर 2 है कितना है The rebate on bill discounted 31st March वाला ना. हाँ 31st मार्च 24 दैट इज क्लोजिंग 5 lakhs. कितना है 5 lakhs. 5 लाख 5 lakhs है हाँ 5 lakhs so 5 lakhs is that I need to write down that 5 lakhs and then take the total so how much will be the answer for me 4 lakh 90 plus 14 lakh 60 minus 5 lakhs how much will be the answer for the same 14 lakhs 50. 14 lakh 50,000 okay 14 lakh 50,000 चलो नेक्स्ट 13 में क्या आया what all things comes in next 13 में क्या रहेगा रीबेट और डिस्काउंट ऑन बिल्स हो गया ओपनिंग हो गया क्लोजिंग हो गया अब क्या आया Interest on cash credit. इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट अमाउंट प्लीज 20 30,000. कितना 22 lakhs 30,000. 22 lakh 30,000 इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट शायद से दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट नहीं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट सौरभ तू भी बोल सकता है या तो प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक अलोन if Rishita speaks he will get bored so others also please check the sums and kindly give your answers so 15,40,000. Ruchita good morning
Good morning, sir. हाँ बोलो रितिका, हाउ मच इज इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 15,40,000, 15,40,000. नाउ इज देयर एनीथिंग एल्स रिमेनिंग 15,40,000? 13 में कुछ भी आ गया और बच गया? प्लीज चेक इट आउट. आई डोंट थिंक सो. 13 में कुछ आ गया. 16, 16, 15, 16, 16 ओपनिंग, 14, 14, 15. I don't see anything remaining in schedule number 13. So what we do is total. So how much will be the total? Please tell me the total. Very good. If you are doing the sum on laptop, very good. Total बता दो कितना आएगा? 80,10,000. कितना? 80,10,000. 15 lakhs 10,000. Is it so? What I can do is just give me 1 minute. What I can do is I can use this on Excel फाइल पे कर देता हूँ तो टोटलिंग फटाफट आएगा. Because तुम लोग अगर मुझे जवाब दे रहे हो तो then I can put it on Excel. That will be more faster. And I hope to take your exam on Excel only. Just give me 1 minute, please. Excel format, it becomes more comfortable for me to solve the sum. Chali. We completed schedule number 13. We got this total as 80 lakh 10,000. Once we get this total as 80 lakh 10,000, then what we do? Nothing simple. Hai. Just go to your schedule number 13 again. Current year amount 80 lakh 10,000. Simple. Then schedule number 14 is other income. So come again to your working notes. Use the same thing. Control C मैं करता हूँ. And then I go back over here. Control V. Schedule 13 के बदले schedule number 14. Schedule 14. What all things have been covered in schedule 14? Just we need to write that. Tell me, what are the things that we are going to see in schedule 14? What all things have been given to you? Just see.
Interest on investment. Kritika, can you say again? Interest on investment. Interest on Investment. investments. Next amount, please, of the same 3 lakh. 3 lakhs. Yes. 3 lakhs. Next, just give me Commission. 1 minute. एक second now. हाँ, बोलो अब. Commission. 82,000. Commission 82,000. Next, Interest on current accounts. कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट. हाँ. इंटरेस्ट इन करंट अकाउंट को मैंने 14 में नहीं रखा होगा. 14 वाला चेक करो बेटा. whatever is coming under 14, check that. whatever is coming 14 under 14. क्या क्या है Interest 14 on में? current सौरभ चेक. accounts. हाँ, Interest on current accounts. 14 नहीं है. नहीं बेटा, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट कहाँ 14 में दिया? वो तो अगर दिया रहेगा, बाई मिस्टेक दिया रहेगा, वो 15 में होगा. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, इट इज नॉट 14. Yes, I have written it. Just make a clarification that it will not be 14, it will be 15. Okay. 14 में तो इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट अगर 14 में दिया है dividend तो on 14 में share. नहीं, तो 15 में आएगा. 14 में डिविडेंड Dividend ऑन on शेयर share. रिसीव्ड एंड इनकम फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स. डिविडेंड डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड. अमाउंट बोलो डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड पे कितना है? 2 lakh. 2 lakh. दिव्यता अमाउंट કેટલું છે? डिविडेंड ऑन शेयर्स रिसीव्ड 2 lakhs. 2 lakhs. Then next क्या है? Income from joint Income from venture. joint. One lakh. Amount is 1 lakh from शिव. अब इसका हो गया 14 हो गया, तो टोटल कर लेते हैं. टोटल कितना आएगा 14 का? वेरी सिंपल. I just take this down. 6,82,000. 6,82,000 is the total coming. I'll go above and write it in my total 6,82,000. Six lakh 92,000 now comes schedule number 15. You have to just keep on checking schedule number 15. Schedule 15. If interest on current account by mistake I've written it as 14, you make it as 15. वो याद रखना. और schedule 15 में चेक करो 15 किधर किधर मार्क किया है. Which all areas you have marked 15? Please read it out. Interest we on can fixed deposit. Interest on fixed deposit.
amount 27 27 lakhs 50,000. Rishita 20 27 lakhs 50,000. 7,50,000 next बोलो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट के बाद Interest on saving bank इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स हाउ मच 6 lakhs 80,000. 3 lakh 6 lakhs 80,000. 6,80,000 इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी भूल गई हो वो याद रखना कि वो भी 15 ही है बाय मिस्टेक उसको 14 लिख दिया मैंने सो आई जस्ट मेक दैट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 4 lakh 20,000. 4,20,000 नेक्स्ट Interest इंटरेस्ट ऑन on करंट अकाउंट borrowings इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स 2 lakhs. 2 lakhs और कुछ बचा 15 में I don't think so. Nothing remains. If I'm not wrong. No sir. तो just selection करना है इसका and sum 40 lakhs 50,000. That's the total coming. और same 40 lakhs 50,000 ऊपर लेके जाऊंगा and I'll write it in my here 40 lakhs 50,000. If I'm not wrong, 40 lakhs 50,000. Then comes schedule 16. Please check what all things are there in schedule 16. चलो एक एक करके आप लोग ने देखा रहेगा पढ़ो फटाफट बताओगे फोर्टी व्हाट इज देयर इन शेड्यूल 16 Establishment charge यस एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 5,40,000 एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस 5,40,000 नेक्स्ट व्हाट ऑल थिंग्स इन शेड्यूल 16 rent and rates. रेंट एंड रेट्स इसका एक फॉर्मेट है जो कि जब मैं ऑफलाइन सेशन लूंगा तब बता दूंगा अभी फिलहाल ऐसे जैसे दिया वैसे ही लिखते हैं रेंट एंड रेट्स अमाउंट प्लीज 1 lakh 80. 1,80,000 नेक्स्ट आफ्टर रेंट एंड रेट्स Director's fees डायरेक्टर्स फीस डायरेक्टर फीस अमाउंट 30,000. 3,000 नेक्स्ट Auditor's fees ऑडिटर्स फीस अमाउंट 12,000. 12,000 नेक्स्ट Postage and telegram पोस्टेज मैं सिर्फ पोस्टेज लिखता हूँ टेलीग्राम करता हूँ इंस्टाग्राम चलता है 14,000. कितना 14,000. 14,000 हाँ पोस्टेज एंड टेलीग्राम 14,000 Sundry charges. सन्ड्री चार्जेस कितना था 29 Yes sir 29,000. 29,000 that's all 16 में is this much all please see your adjustment below एडजस्टमेंट में एक पॉइंट सिर्फ देखना है तुमको जहाँ पे बोला है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ अमाउंटेड टू ₹4 लाख बैड डेट्स का मतलब पता है व्हाट डज बैड डेट्स मींस बैड डेट्स मींस कि तुमने Sir पैसा किसको दिया irrecoverable था amount. हाँ जी Irrecoverable इरिकवरेबल अमाउंट amount. यस मतलब जो अमाउंट तुमको मिला ही नहीं तो वो भी तो तुम्हारा एक्सपेंसेस हो गया तो बैड डेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 4 lakhs if I am not wrong so that also needs to be added and then we do the total so total and this total का sum comes to 11,78,000 what I do is I just control C go I input it into the current year का amount operating expenses control V
So Control G becomes operating expenses 11 lakh 78 thousand. Now provisions के लिए you need to prepare a working note. और मैं बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ ये वर्किंग नोट, तुम समझेगा क्योंकि provisions में कुछ अलग चीजें हैं. This is the only थोड़ा सा change from the usual things. That is where do we go? Because if you see your adjustments, mein, I think 2-3 adjustments I have already taken. Like bad debts is already done, and rebate on bill discounted we have already done. So these two adjustments we did. What's the provision for taxation? At 25%. Now provision for taxation can be removed only on what? Provision on taxation मतलब कि earning before tax का 25% ना. Whatever is your profit before tax उसका 25% you can take as taxation. तो जब तक तुमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही पता नहीं है तो कैसे करोगे. सो दैट इज वाई प्रोविजंस के लिए एक वर्किंग नोट करनी पड़ेगी. सो वर्किंग नोट टू, आई वुड से इट एज वर्किंग नोट टू. जस्ट हैव टू डू नथिंग बट टोटल ऑफ योर इनकम. टोटल ऑफ योर इनकम इज व्हाट? इट इज नथिंग बट शेड्यूल नंबर 13 प्लस शेड्यूल नंबर 14. So if you go up and check what was your total of schedule 13 and 14, 86 lakh 92,000. 86 lakh 92,000 is your total. So 86 lakh 92,000 is my total of my income. And then I have to do is total of expense. Total of expense how? Schedule 14, schedule 15 plus schedule 16. That is one. So what is the total of my 15 plus 16? So to go up, check those out. 40 lakh 50,000 plus 11 lakh 78,000. 40 lakh 50 plus 11 lakh 78 comes to 52 lakh 28,000. 52 lakh 28,000. 52 lakh 28,000. ये माइनस करना है. टोटल इनकम ऐसे टोटल एक्सपेंस है, बट ये सिर्फ नहीं है. Many other things also we need to do less. That is one more thing that we need to minus is provision. Please see your last point of adjustment. Your last point of adjustment provision for NPA करके दिया है. Provision for NPA करके कुछ मिला. What is the difference between bad debts and NPA? I'll tell you that difference later on, but basic difference between bad debts and NPA is bad debts मतलब actually loss हो गया, और provision मतलब you feel that there will be a loss. So how much is the loss that you are anticipating? Please see the last Lakh. point. I don't remember. 1 lakh. How much? 1 lakh. 1 lakh. हाँ 1 lakh. So you anticipate मतलब सोच रहे हो कि इतने का लॉस हो जाएगा तुमको. तो अब कितना आएगा अमाउंट तुम्हारे पास अर्निंग बिफोर टैक्स. तो अर्निंग बिफोर टैक्स you get is nothing but the sum of these three, which is 33 lakh 64,000. Out of that you minus tax. Taxation at 25%. 25% किसका? तो ये ऊपर वाला अमाउंट multiplied by 0.25. You get 8,41,000, and that is what gives you profit after tax, which is nothing but equal to this minus 8,41,000. It comes to 25,23,000. So this is what your profit after tax will look like. Just make it as bold. But यहाँ पर आते हैं अब हमारा मेन फॉर्मेट में आते हैं. When we come to our main format, you'll have to be a bit more careful. Why? Why you have to be more careful? The reason is because of
what will happen here? Here you will have two things. One is provision, provision for NPA का एक amount था तुम्हारे पास, which is 1 lakh plus you had provision for taxation का एक amount which is 8,41,000 if I am not wrong. So if you take up this, I think it is 8 lakh. कितना था provision for tax 8,41,000. So 9,41,000 is your provisions का amount. 9,41,000 is the amount of your provisioning. So what is your total expense coming now? Your total expense comes to 61,69,000, and profit after tax is total expense and total income. So total expense में से total income, so profit after tax is nothing but A minus B. So if I have to do equal to 86,92,000 minus 61,69,000, it comes to 25,23,000. This you can cross verify over here, 25,23,000. This you can cross verify. Nothing else. You have just removed from that amount only. So this comes my profit after tax. Now go back to your trial balance and see P&L account here 1/4/2023 और वहां पर तुमने लिखा है ओपनिंग करके P&L में प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर करके है ना ऋषिका did you get please see in your sum it is given there P&L account then I Yes, have sir, written opening 17,000. 17,000 and then there is appropriation. Now this transfer to statutory reserve मैं बोलूं या ना बोलूं it is compulsory. Please keep in mind transfer to statutory reserve is a mandatory thing whether I give it in your exam or I don't give it to you in your exam. It is mandatory to do that and it is 25% of current year profit. What is current year profit? This is your current year profit. 25,23,000 ka 25%. So 25,23,000. 25,23,000 multiplied by 0.25. 25%. So whatever the answer comes, we'll write over here. So equal to 25,23,000 multiplied by 0.25. Whatever is the answer of this, you will get over here. 6,30,750. Am I clear? Transfer to other reserves, nothing is given, so I put it as 0. Proposed dividend is 0. Closing balance will be equal to nothing but this plus your opening balance minus these all. You get 19,09,250. 19,09,250 should be your answer. This sum must be there in your book, but I have done some small changes in the sums. That is why. So kindly see. So this is the first sum that we took. So now question comes. Just give me now. Now the question comes over here that what we need to do with regards to sir NPA because the NPA is one of the most important and essential element of your chapter. This way there can be a lot of questions that we can work around because banking sector mein NPA plays the most important role. What is an NPA? You have learned it in 11th standard, 12th standard, 13th standard. You have learned. But what is an NPA? That you will only understand. In banking transactions, we don't use the word called as doubtful debts. Meaning same है, लेकिन हम banking में we don't use the term as doubtful debts.
We use this term called as NPA. तुमने doubtful debts पढ़ा है ना? Everyone, Yes, sir. you all have studied about doubtful debts if I am not wrong. Right or wrong, Rishita? Have you studied about doubtful debts? Yes, sir. What is doubtful debts? सर वो अमाउंट जो रिकवरेबल है या नहीं उसकी श्योरिटी नहीं है. Yes. Well, you are not sure whether you will get the money or not, in simple words. So the next part is non-performing assets. Non-performing assets. Now, what happens with non-performing assets? Whether you will get this money. This is another word for your doubtful debts. This is another word for doubtful debts which you have learned in standard 11, 12, 13, 14, 15 सब में पढ़ा. लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हम इसको बोल देते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग असेट. But there are certain rules under which these doubtful debts are to be taken in banking. In Companies Act, there are no rules. You might create a RDD in Companies Act. The RDD can be created as per the previous patterns, assuming assuming I don't know whether which okay word file is only visible, no? Then RDD can be created as per the previous pattern, assuming uh, 2% or 5%. That way, you create an RDD. But in banking, as the RBI governs the banks, there are rules of charging the percent of NPA. Now, here I will use NPA. RDD is used in debtors and creditors kind of a thing, which is accounts receivables and accounts payable. Here we use RDD, NPA. We don't use the word RDD. So percent charging of NPA is based on a governing of RBI. You cannot do any changes in this. So that is why you need to understand that what all things governs in banking as the RBI governs the banks, there are rules for charging the percent of NPA. And there are ways on as as there are different kinds of assets. Their valuations also differ. So the RDD is so the percent of NPA. So the percent of NPA also changes. तो ये क्या लिखा है मैंने एक को समझाता हूँ बहुत सिंपल वे से. As there are different kinds of assets, their valuation also differ. So the percent of NPA also changes. Now, what are we trying to teach you over here? Let's take an example. Let's take an example. And this example is not there in the book, so you'll have to understand. Let's take an example. There is, uh, let's take Saurabh purchases a car for INR, purchases a car on loan from Kenneth Bank. सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है अब. 8 second, let me check.
Which file are you able to see then? सर वो सम वाला जो अभी करवाया आपने। Now can you see? अब कौन सा दिख रहा है? वर्किंग नोट टू। अच्छा सेम ही दिख रहा है, एक सेकंड, तो फिर मेरे को कुछ गड़बड़ हो गया। एक्सेल फाइल ही दिख रहा है क्या? यस सर, एक्सेल ही दिख रहा है। हाँ, वर्ड फाइल दिख रहा है? नो सर। नो सर। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, ऐसे कैसे दिख रहा है? वर्ड फाइल दिख रहा है? अब कौन सा दिख रहा है, वर्ड फाइल दिख रहा है कि एक्सेल ही दिख रहा है अभी भी? एक्सेल। अभी भी एक्सेल दिख रहा है? मैंने स्क्रीन करके रखा है, जो भी स्क्रीन पे मैं जाऊंगा वो दिखेगा। तब क्या दिख रहा है भाई? दिव्य तो आप क्या दिख रहा है? और ऋतिका, somebody can tell me what is visible on the screen? एक्सेल ही दिख रहा है सर। अभी भी एक्सेल दिख रहा है? ऐसा कैसे हो गया भाई? अब क्या दिख रहा है? अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। Now can you see the word file? Yes, sir. यस सर। ओके अच्छा। तो मैं कहाँ पर था, मैंने यही बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, डाउटफुल डेट्स इन कंपनीज लाइक द आरडीडी कैन बी क्रिएटेड एज पर द प्रीवियस पैटर्न। मतलब तुमने कुछ प्रीवियस में 2% दिया, 5% दिया तो तुम चलता है। बट इन बैंकिंग एज द आरबीआई गवर्न्स द बैंक्स, देयर आर रूल्स इन ऑफ चार्जिंग द परसेंट ऑफ एनपीए। कुछ परसेंटेज को चार्ज करने के लिए कुछ रूल्स है। एंड एज देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स, देयर वैल्यूएशन आल्सो डिफर, सो द परसेंटेज ऑफ एनपीए आल्सो चेंजेस। अब इसके ऊपर मैंने एक एग्जांपल ले रहा था कि सौरभ परचेज अ कार ऑन लोन फ्रॉम केनेथ बैंक वर्थ INR 20 lakhs। सौरभ ने 20 लाख का लोन लिया है केनेथ बैंक से, ठीक है। कार लिया है, ही हैज परचेज द कार। तो कार वर्थ 20 lakhs। आफ्टर 3 EMI, सौरभ doesn't pay the EMIs, ठीक है। अब ये था एक पार्ट, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, ओके। एग्जाम्पल 2, example 2 is, let's take for example Ritika. Ritika purchases a house on loan from Kenneth Bank. Kenneth Bank worth INR 20 lakhs.
And after 3 EMI, Ritika stops paying the EMIs. What is the problem here? प्रॉब्लम ये है, तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ केनिथ बैंक को होगा कि भाई सर ये दोनों ने, एक ने कार खरीदी, लोन अमाउंट सेम है, सिर्फ असेट क्लास डिफरेंट है। लोन अमाउंट सेम है लेकिन असेट क्लास डिफरेंट है। एक ने कार खरीदी है, एक ने घर खरीदा है। व्हाट विल हैपन ओवर हियर? हाउ डज केनिथ बैंक मेक अ प्रोविजन ऑफ एनपीए? प्रोविजन कैसे ले एनपीए का? हाउ विल केनिथ बैंक डू द प्रोविजनिंग ऑफ एनपीए? तुम्हारे रेफरेंस के लिए आरडीडी, एज देर आर टू क्लासेस ऑफ असेट्स। मतलब एक है कार, एक है हाउस। हाउ डज केनिथ बैंक वर्क अराउंड विद इट? व्हाट विल डू ऋषिका? कुछ समझा इसमें कि नहीं समझा? कि सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, चलेगा ना, कार हो या घर हो दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क देता है? नहीं सर, अलग है, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं दोनों के। अच्छा, दोनों के रेट क्या कंडीशंस अलग होते हैं? होम लोन के लिए मॉर्गेज वो नहीं होता है। जस्ट अ सेकंड ना, 1 मिनट प्लीज। Excuse me, sir, you are not audible. No, no, I was just actually something happened, that is why. Just give me 1 minute. Uh, okay, I just got lost somewhere. Okay. Uh, Rishita was saying something called as कि दोनों के provisions अलग अलग होंगे. The answer is yes, there will be different provisions for, because the asset classes are different. Why is that so? Because for a fact that the whenever you buy car, whenever, let's say Saurabh bought the car of INR 22 lakhs with a loan of 20 lakhs, there is an unwritten provision that once the car is out of showroom, means it is delivered to you. Out of showroom means it is delivered to you. There is, it is depreciated. It is depreciated by 30%. मतलब immediate depreciation is 30%. मतलब तुम्हारी जो 22 लाख की गाड़ी है उस पे तुम -30% कर लो, तो बचा कितना? 22 लैक्स पे 30% माइनस कर देना, माइनस करना। 22 लैक्स पे 30% मत निकालना, तो कुछ अलग निकलेगा। 22 लैक्स माइनस 30% करो, कैलकुलेटर पे कितना आ रहे हैं? हाउ मच इज इट कमिंग? हाउ मच इज इट कमिंग?
हाँ सौरभ, कितना आ रहा है? 22 lakhs minus 30%। 15,40,000। कितना? 15,40,000। 15,40,000, सीधा सीधा 15,40,000 वैल्यू बन गया कार का। सो कैन यू हैव द सेम methodology for a car and same methodology for a house? हाउस की वैल्यू कभी घटती नहीं है इतनी जल्दी 30%। मतलब अगर मैंने कोई घर खरीदा तो सीधा सीधा 30% डेप्रिसिएशन नहीं लग जाता उससे, क्योंकि हाउस पे इतना परसेंट लगता ही नहीं। और हाउस 20 लाख का जल्दी मिलेगा भी नहीं सबसे पहले तो 20 लाख का मिलेगा, कहीं और मिलेगा, बट उस पे इतना जल्दी नहीं पे ये हो जाएगा। So that Yes, is sir. the It will reason take that the time. value, yeah, it will take time. So I mean, the value of the car will depreciate immediately, but the value of the house won't depreciate so fast. And that even the banking and RBI knows it. So that is why what RBI said was that we divide certain asset classes, and they divided the asset class not based on the class of the asset, because they couldn't do, because there are so many classes of assets which are there. I mean, there is a house, there is gold. People take gold on loan. People take house on loan. People take vehicles on loan. People, it can be two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler. It can be truck. Somebody, businessman can take it a truck on a loan. So there can be n number of asset classes. For example, there is something called as a consumer loan. जैसे मैंने अपना लैपटॉप लिया था लोन पे, मैंने अपना मोबाइल फोन लिया है लोन पे, तो दिस इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर लोन। जैसे मिलते हैं ना अपने को कंज्यूमर लोन। फॉर एग्जांपल, यू गेट व्हाट यू कॉल इट एज, तुम्हारा अभी जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का आएगा अमेजोन पे, तो वो तुमको फाइनेंस फैसिलिटी देगा। तो दोज काइंड ऑफ थिंग्स कैन टेक प्लेस। So it was a very difficult thing. So that is why what RBI did, they divided into the asset class as standard assets, substandard assets, substandard assets, एंड लॉस असेट्स। तो आरबीआई ने बोला कि भाई ये तीन क्लास में तुमको डिवाइड करना है, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स एंड लॉस एसेट्स। अब ये है क्या स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स एंड लॉस एसेट्स? तो दे आर नथिंग बट, आरबीआई ने बोला कि भाई ये तुम्हारे जो है ना, ये क्लास ऑफ असेट्स है जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ तुमको, और मैं तुमको बता रहा हूँ कि इस तरह से तुमको जाना है। इसकी थियोरी मैं तुमको दे देता हूँ, और जो पार्ट को पढ़ना है वो पार्ट मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। सब क्लासिफिकेशन में, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो चीजें सिर्फ थियोरेटिकल पर्पस के लिए मैं दे रहा हूँ, और डू नॉट कंसिडर देम, दोज थिंग्स व्हिच आर इम्पोर्टेंट, दोज आई विल। चलो ठीक है, ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि ये कुछ ज्यादा इतना, इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट आई गिव यू द डेफिनेशन ऑफ व्हाट आर स्टैंडर्ड एसेट्स एंड व्हाट आर substandard assets and what are loss assets. Standard assets are those whose value will not fall so much, but आरबीआई ने ऐसे नहीं बोला है कि कौन सी किसकी वैल्यू कैसे गिरेगी। आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई ने बोला कि भाई तुम लोग असेट खरीदते हो, बैंक को बोला कि कितने दिन में तुमको पैसा नहीं मिला तुम उसको बता दो। तो एनपीए इज वेरी सिंपल। ये जो पार्ट है ना, इसको सिर्फ याद रखना, ये जो लिखा हुआ पार्ट है, व्हेन द अमाउंट इज नॉट रिकवर्ड और रिसीव्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, एनपीए स्टार्ट हो जाते हैं।
ऐसी कोई भी लोन जो तुमने दिया है, बैंक ने कोई भी लोन जो फॉरवर्ड किया है और 90 दिन में अगर पैसा नहीं आया, 90 डेज में पैसा नहीं आया, मतलब समझ जाओ कि इट हैज टर्न्ड इनटू एन नॉन परफॉर्मिंग असेट, और तुम उसके ऊपर प्रोविजन लिख सकते हो। अब कितना परसेंटेज देना है उसके लिए बैंक ने बोला है कि भाई सोच समझ के देना। ये जो मैं दे रहा हूँ वो प्योरली थियोरेटिकल है, बैंक्स के अंदर ये प्योरली थियोरेटिकल है। दीज थिंग्स आर नॉट, प्लीज बी वेरी क्लियर कि ये सारी चीजें अब जो है बैंक के हाथ में आरबीआई ने दे दिया है कि तुम डिसाइड करो कि भाई तुम्हारा लॉस कितना है, वो हिसाब से डिसाइड करो, हम पे मत डालना। सो दैट इज वाई द थिंग इज दैट कि आरबीआई ने बोला कि जब तुम्हारे पास भाई लिमिट हो तब बाई कर लेना, और तुम्हारे पास जब तुम डिसाइड करो कि तुम्हारा जो लोन है, क्योंकि तुमने लोन दिया है ना, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई बोले कि भाई आई लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ सौरभ एंड आई फाउंड दैट इवन दो मैंने इसको कार दिया है लेकिन मेरे को इसका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है, ये टाइमली पैसे दे देता था, तो मैं परसेंटेज अपने हिसाब से डिसाइड करूँ, ये हो सकता है। और अगर ऐसा कोई आदमी हो जैसे वैभव सर टाइमली पैसा नहीं देते थे, हर बार नखरा होता था, इनका 3 EMI ना 4 में आया और हर बार पे करते थे, तो आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ वैभव सर। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब I hope you understand what I'm trying to say. So this is practicality now taking place. Theoretically, these are the rules. The standard assets क्या होते हैं, substandard assets क्या होते हैं? When the advance are not received from 90 days to 365 days, that is 3 months to 1 year, we classify it into substandard asset. When the money is not received from 1 year to 3 years, it is called as doubtful asset. And over and above 1 year, 3 years हो गया तो it is called as loss assets. मतलब अगर पैसा 3 साल से मिला ही नहीं तो लॉस असेट्स। लेकिन अब बैंक्स 3 साल वेट नहीं करते। देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस कम्स प्रैक्टिकली, अगर मैं बताऊं तो जैसे एक रूल आ गया ऑफ सरफेसी एक्ट आ गया है, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड आ गया। ये सारे में क्या हो रहा है कि बैंक्स बोलते हैं कि भाई मैं 3 साल तक थोड़ी वेट करूंगा, मेरा पैसा आने के लिए मेरे को 3 साल वेट करना पड़ेगा, मैं कैसे वेट करूं, तो बिजनेस कैसे करूंगा। मतलब कोई आता है मेरे पास से लोन लेके जाता है और फिर 3 साल तक पैसा नहीं देगा, तो मैं उसका वेट करते रहूं, दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट इज नॉट पॉसिबल, सो दैट इज वाई बैंक्स ने अपनी एक लिस्ट बनाई और बोला कि भाई तुम्हारे पास क्या हो सकता है वो देखो। गॉट इट? जस्ट गिव मी 1 मिनट। यू अंडरस्टैंड दिस वाला पार्ट? इसमें वो ज्यादा है नहीं, ये थियोरेटिकल है थोड़ा बहुत, बट हाँ इसमें प्रैक्टिकल सम्स है विच आई विल एक्सप्लेन यू राइट अवे। इसमें प्रैक्टिकल सम्स है लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रैक्टिकल सम्स है। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये जो मैंने दिया है ये सारे थियोरेटिकल है कि एग्रीकल्चर एडवांसेस पे अगर एनपीए होता है तो कैसे करना है, क्योंकि यू कैनॉट कैलकुलेट द सेम वे लाइक यू कैलकुलेट फॉर अ हाउसिंग। एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा डिफरेंट वे है। The main part which I'll mark it in red, you have to read that part. तो ये है प्रोविजनिंग का पार्ट कि कितना परसेंटेज तुम प्रोविजनिंग रख सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ रेड में ताकि तुमको पता रहे। ये
वाला जो पार्ट है ना, ये प्रोविजनिंग का परसेंटेज है। अगर एक साल से लेके अप टू 1 ईयर तक नहीं आया तो 20% रेट ऑफ आरडीडी होगा। अगर 1 to 3 years है तो 40% एंड मोर देन 3 years है तो 100%। मतलब तुम्हारा 100% पैसा गया, मतलब वो प्रोविजनिंग बैड डेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज वाई स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर लगता है 0.25%। Generally this percentage we will provide you, but it is just for your knowledge that you have to keep in mind. Generally we will provide you, but हर एक टाइप के assets के लिए अलग अलग provisioning है, so you don't want to put it into you कि कैसे करना है, but इससे ज्यादा एक और पार्ट है। मीन है, इसको याद रख लेना नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में प्रोविजनिंग सबस्टैंडर्ड हो तो अप टू 1 ईयर 20%, डाउटफुल असेट्स है 1 to 3 years 40%। इस तरह से करना है, ठीक है। दिस इज वन पार्ट दैट यू कीप इन माइंड। अब आते हैं कि हाउ डू वी रिकॉर्ड इट इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर एनपीए है, इसका इनकम रिकॉग्निशन कैसे करेंगे अपन। जस्ट गिव मी 1 minute, इट टेक्स हार्डली इट विल टेक सम टाइम। Rupees in crores, these are the things given। एक है परफॉर्मिंग असेट्स। व्हाट इज परफॉर्मिंग असेट्स? वो जो है टाइमली पैसा दे देते हैं। परफॉर्मिंग असेट्स वो जो टाइमली पैसा देते हैं। अब ये जो मैंने वर्ड बोला यहाँ पे इनकम रिकॉग्निशन, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम रिकॉग्निशन? अभी हमने एक सम किए थे पीएनएल अकाउंट का, इसमें हमने बोला था इंटरेस्ट इनकम। शेड्यूल नंबर 13 बनाया था। शेड्यूल नंबर 13 में क्या लिखा था? इंटरेस्ट इनकम। कि सर हाउ मच इज द इंटरेस्ट इनकम दैट वी हैव अर्नड। मतलब क्या कि तुमने ये लिखा था 80, ये यहाँ पर अमाउंट दिया था इंटरेस्ट अर्न का, विच इज समवेयर अराउंड 80,000, 80 lakhs 10,000। एंड यू केम हियर एंड यू रोट ओवर हियर 80 lakhs 10,000। एक्सेल फाइल में वी हैड रिटन दिस 80 lakhs 10,000। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये तुमने लिख दिया, ये तुमको इंटरेस्ट मिला, तुमने लिख दिया, बट ये इंटरेस्ट तुमको किसी असेट के ऊपर मिला ना, तुमने लोन दिया, एडवांसेस दिया, उसके ऊपर मिला। You have given a loan. Let's say for example, I take the example of same सौरभ वाला एग्जांपल कि सौरभ ने कार लिया है और कार लोन पे थी, लेकिन 3 ईएमआई के बाद उसने पे ही नहीं किया। हाउ डू यू कंसिडर दिस? तो हाउ व्हाट इंटरेस्ट यू विल राइट डाउन, हाउ मच इंटरेस्ट इज अर्न। परफॉर्मिंग असेट में कैश क्रेडिट एंड ओडी है, टर्म लोन है, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड है। और नॉन परफॉर्मिंग असेट में वो लोग है जिन्होंने भाई तुम्हारा पैसा ही नहीं दे रहे हैं बहुत टाइम से, उनके पास से तुमको लेना है 450 करोड़, बट अब तक सिर्फ 70 करोड़ रुपए ही मिला है। टर्म लोन पे 300 करोड़ लेना है, लेकिन सिर्फ 40 करोड़ ही मिला है। तो हाउ डू यू जस्टिफाई? अगर सिंपल सा बोलो, द डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड नॉन परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग आर रेगुलरली पेइंग यू द मनी एंड नॉन परफॉर्मिंग आर दोज who have not paid you money for past 90 days. Simple. If you don't want to understand too much things, just consider this way, that performing means they are keeping on regularly paying you the money. Non-performing are those who have not paid you the money for past 90 days. समझा इतना everybody? रितिका, दिव्यता, सौरभ, केनीत, Yes, sir. ऋषिका, Yes. clear? Okay. So this is what you have to do, understand. But how do I write it in my books of accounts, sir? Because end of the day, I need to understand that what will be written in my books of accounts. Because that is very important for me to know कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा करना है। ये फॉर्मेट जो है, ये मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड में, एंड यू विल ओनली गिव मी द आंसर। पर्टिकुलर्स, इनकम रिकॉग्निशन क्या बोलता है?
पर पीए का मतलब है परफॉर्मिंग एसेट एंड नॉट एनपीए का मतलब है इंटरेस्ट रिसीव में लेंगे अपन। तो तुम्हारे पास तीन परफॉर्मिंग एसेट्स है, थ्री टाइप्स ऑफ परफॉर्मिंग एसेट्स है, और नॉन परफॉर्मिंग भी तीन टाइप के हैं, ठीक है। कंट्रोल सी मारूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे लेके जाके कंट्रोल वी कर। ओके, और परफॉर्मिंग एसेट में इंटरेस्ट कितना अर्न किया वो लेंगे अपन। मतलब इंटरेस्ट अर्न है 1800, 480 एंड 700। ये ले लो इंटरेस्ट अर्न, क्योंकि ये लोग भाई रेगुलरली पे कर रहे हैं तुमको पैसा। These people are regularly paying you. And NPA, which one you will take? You will not take 450, 300 and 350. You will take is this wala part, 70, 40, 36 वाला part. Why? Because सर ये दोनों अपने को इतना ही पैसा तो दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं दे रहे। इन दोनों को ऐड कर दो बस, और कुछ मत करो। 1800 प्लस 70, 480 प्लस 40, तो कितना हो रहा है वो चेक कर लो, बताओ। ये हो गया 1870 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 480 प्लस 40, 520 एंड 736। तो दिस इज द पार्ट। अब इनका टोटल करो। 1800 प्लस 480 प्लस 700 कितना आया? 2500, 2980 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 70 प्लस 40 प्लस 36, 110, 146, 146। एंड ये आ रहा है 3126 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई डाउट? एनी डाउट? सौरभ नो कुछ तो सर। बोल दे कि डाउट हाँ या ना, डाउट है कि नहीं है। नो सर, नहीं है। उसका ऐसा क्यों डाउट नहीं है कि सर ऐसा क्यों किया आपने? 1800 और 70 को ऐड कर दिया, जो बाकी के पैसे है वो उसका क्या होगा? क्या उसको भूल जाना चाहिए कि उसको याद रखना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? हाउ विल यू डू द प्रोविजनिंग सर इन सबका सर? व्हाट विल बी द मेथोडोलॉजी टू डू द प्रोविजनिंग सर? हाउ टू डू द प्रोविजनिंग सर इसका? क्योंकि सर पता ही नहीं चल रहा है क्या है। अगर समझा है तो पक्का ना, समझा? चलो, अगर समझ गया, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग को समझ गया है। ऋषिता बोल रही है कि आगे बोलो सर, समझ गया हमको। पक्का ना ऋषिता? हाँ सर। तो एक और पार्ट करते हैं अंडर दिस पार्ट ओनली। सिंपल से समझे, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। This is the sum which I have for you for NPA only. Again, this is with regards to NPA. How much will be the amount of NPA? We will take care, and what will be the pricing for the same. चलिए, हमारे सामने कुछ सम दिया है मैंने, और उसका प्रोविजनिंग का परसेंटेज भी दे दिया है। कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है, सिंपल सिंपल प्रोविजनिंग का परसेंटेज दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रोविजंस टू बी शोन इन पीएनएल ऑफ अ कमर्शियल बैंक। इट्स find out. Okay, before I move now, what I intend to tell you over here is that when you will write in schedule number 13, अगर मैं suppose तुमको मान लो एक ऐसा ही sum देता हूँ
ये एक टाइप का सम है और उसमें बोलते हो कि हाउ मच इंटरेस्ट यू विल राइट इट इन योर पीएनएल। तो याद रखना इट विल बी दिस 3126 अमाउंट। ओके, you will record it 3126, you will not record 2980 or 146 only, you will record the total। मतलब क्या, याद रखना performing assets में we consider interest earned because they have been regularly paying, and in non performing assets we only consider the interest received वाला part। Be very clear, I hope I am making sense। not performing asset में we consider interest earned, non performing में only those which have we have received as interest। Am I clear? अब आते हैं एनपीए वाला पार्ट। ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, ये था कि तुमने कितना रिकॉर्ड करना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट रिसीव, एंड दिस सम केटर्स टू हाउ मच प्रोविजनिंग विल यू बी डूइंग। कितना प्रोविजनिंग आप कर रहे हो सर, कि फॉर योर, कि भाई तुम्हारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से है ना आरडीडी, वो कितना प्रोविजनिंग है, परसेंटेज कितना लगा रहे हो, उसके बारे में बात करें। ओके, सॉरी, चलिए आप लोग ने देख लिया सम अच्छे से। आप लोग को ही देखना है पहले तो, बहुत सिंपल वे से करना है, नथिंग, दिस सम इज मोर इजी, मोर एंड वेरी सिंपल। करना कुछ नहीं है कि आपको जस्ट ये क्लियर कर देना है। एमसी मेरे लिए तो 2 मिनट में सम बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये सम मैंने कर चुका हूँ कहीं पे। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन, सिंपल। दिस इज द सॉल्यूशन, लुक एट इट। स्टैंडर्ड 5000 lakhs, 4000 lakhs, 800 lakhs, 600 lakhs, 200 lakhs एंड लॉस ऑफ 1000। तो अब करना क्या है, इसके ऊपर प्रोविजनिंग, क्वेश्चन ने बोला था 0.4 लगाओ तो मैंने 0.4 लगाया। अगर क्वेश्चन बोलेगा 0.2 तो आई विल पुट इट एज 0.2। ओके, whatever the question says we will do it according to that one। This question has given you 0.2, so we'll use it as 0.2, otherwise 0.4 जैसे दिया। तो 5000 का 0.4 is 20 lakhs, 5000 lakhs का 0.4 is 20 lakhs, then we have 4000 पे 15% 600 lakhs, then 800 पे 25% 200 lakhs, 25% for more than 3 years, 600 पे 40%, so it is 240, and more than 3 years it is 100%। so that is why this is 200 and this is 1000। so 1000 का 100% is 1000। so total provisioning, so यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन पूछे हैं कि calculate the total provisions to be recorded in P&L, so it will be 2260 if I am not wrong, this is the amount 2260। okay, the second question, calculate the total provisions of doubtful assets। टोटल प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल असेट्स, टोटल प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल असेट्स का मतलब क्या है, तो ये है टोटल प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल असेट्स। तो टोटल प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल असेट्स ये तीन, माय वर्ड्स, दिस इज द थ्री, 200 240 200, 200 240 एंड 300 डाउटफुल, सब स्टैंडर्ड नहीं है, डाउटफुल असेट्स पूछ रहा है। तो बी वेरी क्लियर, विल बी 200 प्लस 240 प्लस 200 which is equal to, can I say, 640 lakhs। Calculate the provisions of standard assets। तो standard assets का कितना provision आया, 20 लाख, 20। Calculate the provision of substandard assets। तो provision for substandard assets कितना आया, provision for substandard assets कितना आया,
600, if I'm not wrong, so 600 lakhs. And the last one is 1000. More than 3 years, loss assets, 1000. कुछ हद तक 1200 भी बोल सकते हैं क्योंकि once you move into more than 3 years, no, it is called as a loss asset only. Generally, we say that way only. The once you move to more than 3 years, it is loss asset only. Okay, for today, I think this much is enough. बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया, क्या क्या कवर किया, चलो समरी ले लेते हैं. व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव कवर्ड. आज के लेक्चर का समरी. व्हाट ऑल थिंग्स डिड वी कवर, एनीबॉडी? सौरभ, इफ यू रिमेम्बर व्हाट डिड वी कवर स्टार्टिंग में? So we did the sum first of all, banking वाला final accounts का. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, नॉट ऑफ फुल बैंकिंग अकाउंट, ओनली सम ऑफ Profit प्रॉफिट and एंड लॉस loss. अकाउंट. ओके, Yes. नेक्स्ट Next we did the NPS part. नॉन परफॉर्मिंग असेट. उसमें व्हाट वी डिड वाज we have covered two parts of it. Non-performing asset में two part. The first part A we covered was income recognition. Means what is income recognition? कि कौन से income को recognition मिलेगा. That is what we covered, income recognition. And B, we covered the provisioning part. How do we do the provisioning? Provisioning of the amount of NTA based on asset class. मतलब standard asset, substandard asset, loss assets. We understood that part. Am I clear, everyone? So we covered this three things today. One is sums we did of profit and loss account based on schedules. So these things we did: non-performing asset, income recognition, provisioning of the amount of NPA based on asset class. Is this fine for everyone? यहाँ तक कोई doubt? Anybody? No sir. सर मेरे को प्रोजेक्ट को लेके एक डाउट है. Hello, बेटा. Yeah, please say what is your doubt? टॉपिक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंप्लायंस इन फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग. उसमें जो फोर्थ चैप्टर है एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट नोट, तो उसमें मैं एक सम दिखा सकती हूँ क्या पूरा कॉन्सेप्ट को लेके? चलेगा. ओके सर, ठीक है. Yeah, right. Anybody else has any doubt? Or can we have a lecture tomorrow also, if everybody is okay with it? यस सर. मॉर्निंग 8 o'clock, क्योंकि शाम को तो नहीं देख सकता, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं. शाम को कुछ सुनाई नहीं देगा मेरे यहाँ पे, तो बहुत आवाज होगा कल. बट 9:30 के आसपास खत्म हो तो बेटर है, फिर ऑफिस रहता है तो बहुत लेट हो जाएगा. हाँ, 9:30 तक खत्म कर दूंगा. आप भी जैसे खत्म कर रहा हूँ, आज भी वही कर रहा हूँ. So we can start at 8 o'clock and 9:30 I will spend it up. बस एक ओके बैलेंस सर, शीट वाला चलेगा. part. ठीक है. हाँ सर. Okay, fine. Then we'll meet tomorrow at 8 o'clock. Okay. Thank you, ओके सर. everyone. Share the बाय sum सर. right away. Yeah, bye everyone. You can leave by the time. Because अगर एक बार मैंने बंद कर दिया तो मैं भूल जाऊंगा. सम तुम लोग को भेजना है, इसके लिए मैं पहले सम भेज देता हूँ. ये तुम लोग का ये वाला है ना. Just give me a minute.
Mhm.